The term microeconomics was first used by Swedish economist Ragnar Frisch in the year 1933. The word micro is derived from the Greek word mikros, which means small. Therefore, microeconomics is a study of individual units. आसान सी भाषा में अगर मैं बात करता हूं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, तो वो मेरा एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ सैमसंग मोबाइल्स की, तो वो मेरा एक माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। अब बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। डेफिनेशन तो बहुत सारे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, लेकिन सबसे इजी डेफिनेशन दिया गया है प्रोफेसर मॉरिस डॉब ने। वो कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। प्रोफेसर केनेथ बोल्डिंग कहते हैं microeconomics is the study of particular firms, particular households, individual prices, wages, income, individual industry and particular commodity. ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स बाय हार्ट करने के लिए मंत्र है, शादीशुदा लोग पहले पहले बहुत आजादी में उड़ते हैं। शादीशुदा लोग पहले पहले बहुत आजादी में उड़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, एस, that is study of individual units. Microeconomics studies individual units. These individual units may be individual households, individual prices, individual wages, individual commodity, anything, but it has to be an individual unit. Point number 2, slicing method. Microeconomics divides the entire economy into different parts, and then the different parts are studied in detail. Point number 3 is L, that is limited scope. As microeconomics studies individual units, the scope is restricted, the scope is limited, because see all of you, the nation-wise problems are not considered in microeconomics. Point number 4 is partial equilibrium analysis. In partial equilibrium analysis, microeconomics considers only the part of the economy. Microeconomics neglects the interdependence of economic variables. It is based on the concept that is called as a ceteris paribus. Now what do you mean by ceteris paribus? Ceteris paribus means other things being equal. Point number 6 is based on certain assumptions. Microeconomics is totally based on assumptions such as full employment, maybe perfect competition. That is why we can say that microeconomic theories are static and unrealistic. Point number 7, analysis of resource allocation. Microeconomics studies each and everything in detail. So if it studies each and everything in detail, here we can also find out how to produce, what to produce, how much to produce, and where the product has to be sold. That is why microeconomics helps us in optimum utilization of resources. Point number 8 is analysis of market structure. In microeconomics, we study different types of markets like monopoly, duopoly, oligopoly, perfect competition, etc. And here in this market, we can also try to understand that how the prices can be determined. Point number 9 is microscopic approach. As our entire economy is divided into various individuals, households, firms, companies, etc. In microeconomics, we use a microscope to look into the entire economy, and then each and everything are studied in detail. Point number 10 is use of marginalism principle. The word marginal means the changes which are brought about in total by an additional unit of a commodity. Therefore, all or majority microeconomics theories use marginalism principle. Hope I have explained microeconomics in detail. For more such videos, please give a like, share and subscribe. One side is micro, the other side is macro. Micro, small. Macro, large. Microeconomics, the word micro is derived from the Greek word mikros, which means small. Macroeconomics, the word macro is derived from the Greek word makros, which means large. As we have studied microeconomics in my previous video, we have seen that microeconomics is the study of an individual unit. According to Morris Dobb, microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. But let's talk about
macro. Professor McConnell once said that macroeconomics is study of the forest, not the trees. आसान सी भाषा में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक एक चीज को इन डेप्थ स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारी चीजों को एक साथ ऊपर ऊपर से स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पूरे इकोनॉमी का स्टडी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के एक छोटे से पार्ट का स्टडी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है टोटल इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट्स की, जैसे कि देश का इनकम, नेशनल इनकम, जैसे कि देश का खर्चा, एग्रीगेट कंजम्पशन, जैसे कि देश का सेविंग्स, एग्रीगेट सेविंग्स। Distinguish between microeconomics and macroeconomics. Point number one, always remember that point number one always has to be the meaning of the concept. For example, point number one, microeconomics. Microeconomics refers to that branch of economics which studies the individual units in detail. Whereas point number one, macroeconomics. Macroeconomics refers to that branch of economics which studies the economy as a whole instead of studying individual units. Point number two, microeconomics studies individual units like individual firms, individual households, individual income, prices, wages, etc. in detail. On the other hand, point number two of macroeconomics, macroeconomics studies the aggregate concepts. Aggregate means totality. Aggregate concepts like aggregate consumption, aggregate demand, aggregate savings, national income, etc. Point number three, microeconomics uses slicing method for analysis. Macroeconomics on the other hand uses lumping method for analysis. आसान सी भाषा में माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी को स्लाइस करके, डिवाइड करके पार्ट्स में एक एक पार्ट को डिटेल में स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स लंप करता है। लंप करना मतलब सारे छोटे छोटे पार्ट को जमा करना और फिर सारे पार्ट्स का एक साथ स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। पॉइंट नंबर 4, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्राइस थियोरी। मैक्रोइकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज अ थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। आसान सी भाषा में माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं। हर एक चीज का प्राइस, हर एक फैक्टर का प्राइस निकालना होता है तो तुम्हें डिटेल में स्टडी करनी जरूरी है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करना पड़ता है। यहाँ पे पूरे देश की बात हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम ये पूरे देश के टॉपिक्स है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज अ थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट नंबर 5, simplest one, the scope of microeconomics is limited, the scope of macroeconomics is wide. You can also write scope of microeconomics is narrow, scope of macroeconomics is wide. Microeconomics uses a partial equilibrium analysis, macroeconomics uses a general equilibrium analysis. Microeconomics partial equilibrium analysis use करता है, means part is considered, other things remain constant. It does not look into the economy as a whole, it considers only the part of the economy, other things being constant. Whereas macroeconomics बात करता है general equilibrium की। General equilibrium में every economic variable is depending on other variable. Interdependence of variables is present in macroeconomics. Example देता हूं, देश का अगर इनकम बढ़ता है तो देश का खर्चा भी बढ़ता है, देश का सेविंग्स भी बढ़ता है, देश का कैपिटल भी बढ़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन assumptions, that is why it is unrealistic, whereas macroeconomics is not unrealistic, it is realistic. Hope you all have understood the difference between microeconomics and macroeconomics. If you by heart the features of microeconomics properly, this distinguish will be very simple, and this is a very important question from your exam point of view.